Good afternoon to all of you, and I am very happy to see that people have come together to solve the problems of education. They are solving the problems of education at this time. Not you that we have Supreme Court judgment KMA pi. Our legal status is that the private sector in education has the full autonomy for administering their institution. The only rider is that the syllabus will be prescribed by the board, the eligibility of the teachers will be fixed by the government, nothing else, and transparency in admission policy. And 11 judges have never sat together to decide matters of education. But unfortunate part is that the governments are not honoring the judgment which has been already passed. Then, now see, when NCERT was introduced, the elite people found that NCERT was not up to the standards of their children. They floated another organization that is called CBSE in order to see that their children were properly processed through quality education. It is unfortunate that the nation is not conscious about the fact that the children of the poor are equally important, but more important than the children of the elite. There is a discrimination being done. At this time, they have put a policy of putting flat, all books will be issued by the board. And these all books are to be issued by the board with respect to only those schools which are affiliated to the JK Bose. But this condition is not applicable to those which are in the CBSE or through other, which is again some total discrimination. That means they don't want that the children across the country should have equal opportunities for better quality education. अब मैं बताता हूँ बुक्स की हालत. आपने देखा होगा साइंस की मैट्रिक की किताब जो बोर्ड पब्लिश करते हैं, और उसके बाद अब एस चांद की पब्लिशर जगजीत सिंह की साइंस की किताब देखो. हर आइटम को कितना एलोबोरेट किया गया है और किस तरह से वो किताब जिस वक्त स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट की किस तरह से थ्रैशिंग हो जाती है, और एज कम्पेयर टू दैट जो वो बोर्ड की किताब पढ़ता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती. मैं कहता हूँ आई एम 90 years old. जब मैं स्कूल में पढ़ता था अर्थमेटिक अलहदा होती थी, ज्योमेट्री अलहदा होती थी, और साइंस में फिजिक्स की किताब अलहदा, केमिस्ट्री की किताब अलहदा, जियोलॉजी की अलहदा होती थी, और कॉन्सेप्ट्स में इतनी एक्सरसाइज होती थी कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होते थे. ये सारी चीज़ें इन्हें छोटी किताब में ढक रखती और हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं सोबर और स्टूडेंट्स का. तो चलो अब हमने इतनी देर तक ये सह लिया, मगर ये अब एक्सट्रीम हो रहा है. एक्सट्रीम इस बात का हो रहा है कि दैट वी हैव स्टार्टेड फीलिंग, जिसको कहते हैं ना, वी आर अगेंस्ट द वॉर. अब देखिए हद ये हो गया, उन्होंने ये भी लिखा है आपको कि हम नर्सरी लेवल की पर की किताबें भी पब्लिश करें. ये तो कम्युनिज्म इन इकोनॉमी तो हमने देखा था, वो तो ऑलरेडी फेल हो गया. अब ये कम्युनिज्म इन एजुकेशन करते हैं. दे आर लेवलिंग आवर स्कूल्स विद द गवर्नमेंट स्कूल्स. एंड आई टेल यू वन थिंग, प्राइवेट स्कूल स्टैंड ऑन देयर मेरिट, प्राइवेट स्कूल स्टैंड ऑन देयर क्वालिटी, एंड क्वालिटी में कंपटीशन होता है. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी. दिस इज व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. आई वांट थ्रू दिस मीडियम टू गिव अ फीडबैक टू द गवर्नमेंट दैट उनकी पॉलिसीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनकी पॉलिसी है फेलिसिटेटिंग पीपल, उनकी पॉलिसी है रीचिंग एवरी इंडिविजुअल टू मेक हिम टू डू हिज वर्क इन अ बेटर वे सो दैट हिज लाइवलीहुड इंक्रीजेस. What are they doing on the ground? On the ground, the whole thing is reversed. You see, आप देखो, on the policy ground, they say create jobs, and on the ground, they are already existing jobs are being closed. इतने publishers हैं, इतने booksellers हैं, इतने इनके employees हैं, all of them are getting de-employed. Is this consistent with their broader policies? Discriminatory application of rules. NOC जो है, NOCs, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड NOCs आर मैंडेटरी फॉर ऑल. क्या गरीब लड़के के बच्चे को सेफ्टी नहीं चाहिए? ये सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही सेफ्टी चाहिए. दे आर कंसर्न ऑन, इट इज नॉट बिकॉज दे आर कंसर्न द सेफ्टी ऑफ द प्राइवेट, इट इज ओनली टू मेक अस मोर मिजरेबल. इफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज देयर दैट दे डोंट वांट प्राइवेट सेक्टर, दे विल लेट देम क्लोज इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर work for promoting education. And present government is trying to encourage privatization, and what they are doing is the discourage. अब 62 schools हैं, NOC किसी की कहीं रुक गई है. अगर उनकी NOC रुकने के लिए उनको डीएफिलेट किया जाता है, did they see that गवर्नमेंट स्कूलों में भी किसी की NOC नहीं है? अच्छा, लैंड कहते हैं लीज पर दे दो. कितने गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट लैंड पर हैं?
क्या उन प्राइवेट लैंडों को उन्होंने लीज पर लिया? Why this discrimination is being done between the private and this discrimination should stop, and we want to give a feedback to the government that whatever they are really trying to help people, that is not on the ground exactly reverse of that. Let me hope छोटी छोटी बातों पर अड़चने लाना, इट इज नॉट। अभी चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज को कहा आई विल एंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो इफ इंडस्ट्रीज आर बीइंग आस्क्ड टू एंश्योर, अब मैं बताऊंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में ये लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, लैंड देते हैं, सब कुछ देते हैं। वाई? बिकॉज दे थिंक दैट दे विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स। और हम तो यहाँ पर लाखों को एम्प्लॉय करते हैं। एंड आई टेल यू, एजुकेशन सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स होती है। और हम not only giving quality education, we are also giving jobs, and they have to appreciate the contribution of the private schools and the contribution of those connected with those private schools in terms of publishers. And quality education will not be there if there is no competition. I hope that by you are all assembling together, the voice will reach the government that they have to go back. कोर्ट से हमने रिलीफ लाया, मतलब ये हमने कोर्ट से रिलीफ लाया, उस रिलीफ को ये एक्सेप्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनओसी सबों के लिए मैंडेटरी है, उस पर ये हमें ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद प्राइवेट स्कूल, आफ्टर ऑल वी आर आल्सो द सिटीजंस ऑफ द सेम सॉइल, एंड आई डोंट नो व्हाई दे डिस्क्रिमिनेट अस। So this thing should be put across them, and I hope that they will try. If they are sincere about doing ease of functioning, they will help us.